जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। CW मारियानो, MARIANO मारियानो वर्सेस RR प्रोवोस्ट, PROVOST प्रोवोस्ट 1941 इसमें लिखिएगा द कोर्ट हेल्ड डेट ओवर के बाद क्या बताया था आपने, डॉक्यूमेंट ओवर, द एनवलप ओवर द एनवलप। लिखिए प्लीज, द कोर्ट हेल्ड डेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 42 is that the objective of section 42 is that the content of will comma which is sealed cover with the registrar shall remain secret during the lifetime of the testator, comma, but on his death the terms of the said will वसीयत वाला बिल है, WILL, the terms of the said will, comma, be made public फुल स्टॉप। पब्लिक का मतलब कि भाई पढ़ के सुनाओगे ना विल, ठीक है, ये बात लिखे, जब तक वो पर्सन जिंदा है तब तक तो विल सीक्रेट रहेगी, क्योंकि एग्जीक्यूट कब होगी बताइए, एग्जीक्यूशन कब होता है, डेथ के पहले या डेथ के बाद बताइए, व्हेन द विल टू बी एग्जीक्यूटेड, बिफोर द डेथ और आफ्टर द डेथ, बताइए कब होती है विल का एग्जीक्यूशन, आफ्टर द डेथ, सिंपल। तो भाई जब तक वो जिंदा है तब तक तो आप एनवेलप में ही रखोगे ना, उसको सीक्रेट रखोगे ना, बस खत्म बात। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विड्रॉल ऑफ द सील्ड कवर, बताया था ना, टेस्टेटर अगर चाहे तो विड्रॉ करा सकता है विल को। विड्रॉल ऑफ द सील्ड कवर विल, 2 सेक्शंस के नोट्स और रह गए, फिर हम लोग अपनी क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। विड्रॉल ऑफ द सील्ड कवर विल अंडर सेक्शन 42, withdrawal of the sealed cover will under section 42। ब्रैकेट में लिखिएगा सेक्शन 44, इसमें लिखिए
when the testator have deposited the will, have deposited the will in a sealed cover, in a sealed cover with the registrar, वहीं पर डिपॉजिट कराओगे ना, in a sealed cover with the registrar, comma, if the testator after depositing the will, if the testator after depositing the will wishes to withdraw it, वापस लेना चाह रहा है, कुछ चेंज करना चाह रहा होगा, जो भी है, wishes to withdraw it, comma, he may apply either personally, or by an agent, to the registrar who holds that will and if the registrar is satisfied, that the applicant is actually the testator, or his agent comma, he shall deliver the sealed cover, accordingly he shall deliver the sealed cover accordingly to the testator or his agent, Last section, next hand डालिए please. Proceedings on death of testator. Proceedings on death of testator. Proceedings on death of testator.
ऑन डेथ ऑफ टेस्टेटर, ब्रैकेट में ले सेक्शन 45, सेक्शन 45, सेक्शन 45, 45 इसमें लिखिएगा प्लीज। आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, after the death of the testator, comma, after the death of the testator, comma, डेथ हो गई उसकी, an application to be made, अब एप्लीकेशन दोगे ना रजिस्ट्रार को कि सर हमारी ये जो विल है इसको सील्ड कवर को ओपन कीजिए, an application to be made, an application to be made to the registrar, to the registrar by the executor, to the registrar by the executor, by the executor to open the same, to open the same, to open the same, and if the registrar is satisfied, and if the registrar is satisfied, that the testator is dead, that the testator is dead, comma, he shall, he का मतलब कौन है, रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं यहां पे, he shall in the presence of the applicant, in the presence of the applicant, in the presence of the applicant open the sealed cover, open the sealed cover, open the sealed cover, सबके सामने open the sealed cover, full stop, change the para. After opening and reading the will, after opening and reading the will, before the applicant, after opening and reading the will, before the applicant, comma, the registrar shall redeposit the original will, shall redeposit the original will, shall redeposit the original will. वापस से बोला था ना मैंने, रीडिपॉजिट कर लेगा, क्या पता मैंने आपको दे दी, मतलब मैं रजिस्ट्रार हूं, मैंने आपको दे दी, आप चेंजेस करके ले आए वापस मेरे पास कि सर आपने तो गलत पढ़ दी थी विल, इसमें तो ये लिखा है, ठीक है, तो वापस से रीडिपॉजिट कर लेगा द विल, ठीक है। ये आपका हो गया सेक्शन 45 कंप्लीट, ब्रैकेट में लिखा है ना ऊपर सेक्शन 45 लिख लिया था ना, ठीक है, तो आपका सेक्शन 45 हो गया कंप्लीट। अब लास्ट है आपका जजमेंट 2026 का, यही लास्ट मंथ का ही जजमेंट है 23 मई का, इसको और लिख लीजिए, आपका बिल हो गया कंप्लीट। इसके अपार्ट आपको कोई भी नोट्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, जो मैंने आपको लिखवाया बस वही पढ़ना है आपको, ठीक है। Subscribe for more content.